Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. We'll start with technical and derivatives outlook. So with Nifty, what we observed during the last week, there was a decline of 2.67%, and we almost came close to 17,000. We came close to 17,421 levels. So the Nifty, what we are observing, the budget day low, which was 17,353, is held right now. So as long as budget day low is held, and even the 200-day moving average comes at 17,368. So we believe this level can act as an immediate support. So right now we are in a downtrend. We have seen a decent amount of correction from its all-time high. We are down by close to 10%. So there can be some trading bounce because we are in an oversold zone. So bounce, which we expect can be in the range of 17,800 to 17,900 levels. We would like to say something for this week remains a very crucial week. If the budget day low is broken and by any chance if the weekly close comes below 17,300, then there can be some more pain in the system and Nifty can correct to 16,500 or something like that. So this week close is very important. Nifty should not close below 17,300. So if 17,300 is broken on a weekly closing basis, then there is some more downside in the market. Having said this, right now we should be observing some bounce back in the indices, in the Nifty. The same with the Bank Nifty. Bank Nifty has corrected. Bank Nifty has seen a low of 39,600 and the budget day low was 39,490. So even though when the last week there was a one-day correction, the Nifty and Bank Nifty both have not broken the budget day low. And the 200-day moving average for the Bank Nifty comes at 39,216. So we are rounding off to 39,000. Bank Nifty should not close below 39,000. So by any chance, if the weekly close comes below 39,000, then there can be a problem for Bank Nifty also. Right now, as long as these levels are held, we should be seeing some bounce back in the Bank Nifty. The levels to watch are 40,800 to 41,000. So that can be the trading bounce. We are cautious for the week. We will figure out till what amount of bounce we'll see in the market. Coming to the derivatives report, Nifty futures have seen a long liquidation to the tune of 22%, which was a reduction of 3.41 million shares. The put call ratio was flat at 0.79% as compared to previous 0.79%. The major additions were seen in 17,500 and 17,600 call options. So that should be the resistance. And on the lower side, 17,400 and 17,300 put options. So that should be the support. In the Bank Nifty has seen a short build-up to the tune of 15.11%, which is addition of 0.50 million shares. And the put call ratio has seen a decline from 0.71 to 0.62, which is slightly negative. The major additions in the put options were seen as 40,000 and 39,800 put options. So that should be the support. On the higher side, same like 40,000 and 40,300 call options. So that should be the resistance for the Bank Nifty. Overall, what we are observing, from the data point of view, we are sensing auto and FMCG to remain strong in the market. Hero Motoko is something which is positive in the charts, and we are even liking in the IT space. We are liking Tech Mahindra. So maybe somebody is taking a view for 8 to 10 months can vouch for 20-25% kind of return in the Tech Mahindra. So that's the view for the week, and we'll have a cautious view if the budget low is broken during the week. So that's all from mine. I'll hand over to Vishal sir for more research updates. Thank you. Yeah, good morning, sir. Good morning, team. So to start off with a couple of news, first is on TCS. So there is a news flow that the deal between BSNL TCS-led consortium, which is worth almost like $3 billion, which is roughly 24,000 crore, is near closure and is expected to receive approval in the month of March.
This deal, if you look at it, is positive for TCS, and it is to set up roughly around 1 lakh 4G towers for BSNL, which will be maintained by TCS for the period of 10 odd years. And from TCS point of view, company will be able to market itself and win deals in the telecom market once they get this particular deal. And this marks an entry and probably strengthen this position of TCS in the telecom space for future deal wins. Next is on PVR. So PVR has announced the opening of 11 screens, multiplexes in Lucknow with a capacity of around 1,841. And with this launch, if you look at, PVR has added around 91 screens, and it's on the target to reach 100 odd screens in FY23. And this bodes well for PVR, and we have buy rating on the stock with a target price of 2010. Next report that we have published is on a credit card data side. So total number of credit card in force in the month of January 22-23, it remains stable at around roughly 8.25 odd crore. And on month-on-month basis, there is a growth in this. Major player who have added the credit card in this particular month is SBI. Then it's followed up by HDFC Bank, Axis, and ICICI Bank. Now, we believe the increase in the spend and further increase in the overall total circulation of card is positive. And this is actually fueled by the Republic Day sale, both on e-commerce platform of Amazon and Flipkart. And overall, this bodes well. Since the credit card being an unsecured lending, it's a high margin product for the bank, and it bodes well. And within the banking space, we continue to remain our preference for HDFC Bank, ICICI Bank, and then Federal Bank. Next is news flow is on Bharat Electronics. The company has opened a new software development center in Visakhapatnam, and which will offer SaaS services for various application to both defense and non-defense sector. And this is a positive for BEL. Next news flow is on cement. So if you look at last week, we have published our monthly update. And overall, the news flow in the sector continued to remain strong. That is imported coal prices, they have continued to go weak, which is basically trending in the line with the way the crude price is moving. And if you look at for the month of March, we're just entering the March, and then we can see further improvement in the profitability for the companies in next year. Is which we expect in the month of Q4. It will move in Q1. And I think within the space, we like Ultratech and then Dalmia Bharat. Next, the news flow is on Edelweiss Financial Services. The company has received a shareholder approval for the merger of proposed demerger of its wealth management business. And with this, it will pay the way for the listing of Nuvama Wealth Management, which was earlier known as Edelweiss Wealth. And I think as per the deal of Nuvama Wealth will allot around 1.05 odd crore equity shareholders shares to the Edelweiss Financial Services, which is on proportionate basis. And next news flow is on Tube Investment. So Tube Investment's subsidiary is making further strengthen its outlook in terms of clean mobility, and they have signed a definite agreement of Tube Investments with the multiple private equity fund, State Bank of India, along with a couple of investors to raise roughly around 1,950 odd crore in the form of equity and convertible preference shares. Total investments by multiples and SBI would be around 1,200 crore. And which basically, if you look at equity point of view, it is 200 crore, and remaining is preference shares. This bodes well for Tube, because what will happen is this will provide further strengthen its reach in the clean mobility space, and that way I think this bodes well for a long term for Tube. Next is on Phoenix Mill. So subsidiary of its company Palladium Construction, he has completed acquisition of prime land parcel of around 5.5 odd acres in Kolkata. I think this bodes well. This will company planning to build a residential development of roughly 1 million square feet in sellable area in Kolkata, and further this is positive for Phoenix Mills. Last thing from my side is on ABB. So ABB has inaugurated its new state-of-art facility in Nasik, which is double its
GIS switchgear productions. This factory will manufacture primary, secondary and primary GIS stations. And if you look at, it will deploy advanced robotics for manufacturing, and is allowed as per the norms of Indian Green Building Council. Overall, I think it bodes well. Basically, company is expanding capacity, and within the capital goods space, this means best bet, which includes ABB and Siemens. Yeah, so that's all from my side, and I'll hand it to the team. Over to you. Thank you, sir. Few research updates from my side. First update on Indian Energy Exchange, IEX. It's set to launch the high price day ahead of market segment by mid-March. This will facilitate electricity generating firms to sell power at prices as high as 50 rupees per unit. So earlier this month, basically Central Electricity Regulator Commission allowed three categories of power generator to participate in the HPDAM market, which was a gas-based generating station using imported RLNG and naphtha thermal plants using only imported coal and battery energy storage system on the petition of IEX. So next update on NTPC. So NTPC has paid an interim dividend of 4,121.08 crore to its shareholder of the financial year of 2022 to 2023. So dividend is paid around 42.50% of the paid up equity share capital of the company. So this is the 30th consecutive year NTPC Limited has paid the dividend. Then next update in Piramal Enterprises. Companies consider raising money up to 600 crore by issuing a secured, rated, listed, redeemable, and non-convertible debentures. The basically company will be a hold meeting on a 1st March for the stock filling report on the 24th Feb. So according to the company statement, during this meeting, board will decide whether to consider approve NCDs up to 100 crores along with the option to retain oversubscription up to 500 crores. So the total size is aggregating up to 600 crores on the private placement basis. The next update on Interglobe Aviation Indigo. More than 50 planes of Indigo and Go First are on the ground due to Pratt and Whitney engine woes amid a persisting supply chain headwind, forcing airlines to explore the wait leasing of aircraft and other options to minimize the disruptions, according to the officials. So the Indigo is looking at various options, including slowing down redeliveries through lease extension, exploring the reinduction of aircraft into the fleet, and apart from this, evaluating wait lease options within the regulatory guidelines. Next update on IOC, company will set up green hydrogen plant across all its refineries at its pivot rupees 2 trillion green transition plan to achieve net zero emission from its operation by 2046. The management is aimed to expand refining capacity of 106.7 million tons per annum from 81.2 million tons. Mahindra Lifespace, the reality firm expects industrial leasing business to reach an annual revenue of 500 crore by 2025, up from 298 crore during the last financial year. In the residential segment, meanwhile, the companies expect to touch 2,500 crore by 2025 from 1,000 last financial year. Next update on Granules India. The Granules India received US FDA approval from new drug application of Lostran potassium tablet 25 mg, 50 mg, and 100 mg. These tablets are used to treat hypertension in adults and pediatric patients. Next update on Tega Industry. Company is set to acquire McNally Sayaji Engineering in order to expand its business portfolio to service a global and Indian business. So this acquisition is expected to complete over the next 2 months. An optimal mix of internal resources and debt would be finance this acquisition. Then next update on Power Grid. The committee of directors on the investment on projects of Power Grid have approved 4 projects which worth around 800 crore. Then next update on NBCC India. Company received order of worth rupees 350 crore to work as a project management consultant (PMC)
for the various buildings at Motilal Nehru National Institute of Technology. Then Zydus has received a final approval from the US FDA for pitavastatin tablets. So basically, these tablets reduce the inhibitor indicated as an therapy to diet and a diet in adult patients with primarily mixed dyslipidemia. The next update on Bajaj Auto is expected to take a steep cut, probably up to 25% in motorcycle three-wheelers production across its export-focused plant in next month. So, which reflecting the uncertainties in its biggest market, Nigeria. The next update on HAL has a signed agreement, or we can say MOU, with Sika Aerospace. So basically, after this agreement, under the agreement, two companies will pursue strategic business cooperation in the fields of aerial search and rescue, that is SAR, and medical evacuation and humanitarian assistance and disaster relief sectors. Uh, so that's it from my end. Now I will hand over to Hitendra for further research updates. थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम इस कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं। स्टार्ट करते टीसीएस के साथ। टीसीएस को एक न्यूज़ फ्लो है कि देख रहे जैसे बीएसएन और टीसीएस के कंसोर्शियम में मिलकर वो $3 बिलियन का डील क्लोज करने वाले और ये एक्सपेक्टेड अप्रूवल है शायद मार्च मंथ में आ सकता है। ये डील में ये है कि टीसीएस टोटल 1 लाख टावर्स 40 टावर्स बीएसएनएल के लिए सेटअप करेगा और अगले 10 साल तक उसे मेंटेन भी करेगा। अगर ये बात सही कही जाती है तो टीसीएस का देखा जाए तो अच्छी डील है और ये मार्केट में ये टीसीएस का टेलीकॉम स्पेस का एंट्री भी बहुत अच्छा रहेगा, तो दोनों के लिए ये बहुत अच्छा है और ओवरऑल मार्केट ऑर्डर्स और कंट्री की। सेकेंडली हम देखेंगे पीवीआर ने एक अनाउंस किया अपना ओपनिंग 11 स्क्रीन का मल्टीप्लेक्स लखनऊ में रहेगा। कैपेसिटी दिखा जाए तो 1840 के आसपास की रहेगी और ये टोटल पीवीआर ने 91 स्क्रीन लॉन्च कर दिया और उनका जो टारगेट है 100 स्क्रीन का FY23 के वो उसके पास जाते हुए रहेंगे। ये हम देख रहे जो वर्ज एंटिटी पीवीआर आइनॉक्स ऑपरेट कर रही है 1650 के आसपास स्क्रीन से। सो ये ओवरऑल एक अच्छा न्यूज फ्लो है। क्रेडिट कार्ड का डेटा देखेंगे तो टोटल इन कार्ड जो है वो 82.5 मिलियन है। अगर देखेंगे तो 1.6% है मंथ ऑन मंथ पे। नए कार्ड बैक्स पे एडिशन बाउंस बैक किया प्रीवियस मंथ के हिसाब से और अमाउंट मेजर प्लेयर्स देखा जाए तो एसबीआई ने सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूट किया जो कि 3.3 लाख है। उसके बाद एचडीएफसी, एक्सिस और लास्ट में आईसीआईसीआई बैंक। स्पेंडिंग देखी जाए तो 11 ट्रिलियन मार्क के ऊपर ही ये 11 कंसेक्यूटिव मंथ है जब ये मार्क के ऊपर रह रहा है और अब इस बार भी इसका स्पेंडिंग देखा जाए तो 45% अप था जो कि ईयर ऑन ईयर पर मंथ ऑन मंथ पे सिर्फ 1% के आसपास का था। सो ओवरऑल की देखा जाए तो न्यूज फ्लो अच्छी है क्योंकि ये जो अमेजोन की स्पेंडिंग और फ्लिपकार्ट की जो ये थी ऑफलाइन ऑनलाइन सेल और विजय सेल्स की, तो जो रिपब्लिक डे सेल थी उसके चलते हमें ये थोड़ा बूस्ट आते हुए दिखा सकता है। तो हमारे टॉपिक इसमें रहेगी अगेन एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और फेडरल बैंक। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे ये न्यूज है कंपनी ने एक ओपन किया नया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर बेसिकली विशाखापट्टनम में है। ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म पे बेस्ड रहेगा और ये बहुत डिफेंस और नॉन डिफेंस सेक्टर को कंट्रीब्यूट करेगा। सीमेंट सेक्टर पे भी न्यूज है कि चैलेंजेस थोड़े ईज आउट हो रहे हैं। मार्च क्वार्टर में देखा जाए तो FY23 के लिए ये सीमेंट कंपनी की रिपोर्ट बेटर फाइनेंशियल नंबर दे सकती है और इनपुट जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा कम होता दिख रहा है और प्राइसिंग एक्शन भी हम देख रहे हैं सीमेंट साइड पे थोड़ी ज्यादा दिख रही। कंपनीज ने भी कहा है कि वो कॉशियस है, ऑप्टिमिस्टिक है और उनका जो एनालिस्ट और लोग है वो एक्सपर्ट बुलिश रखते हैं जो हमारी टॉप पे रहेगी इसका आर्किटेक्चर में। एयरवेज फाइनेंशियल के लिए न्यूज़ कंपनी को एक और शेयर अप्रूवल मिल गया है कि वो अपनी जो प्रपोज डीमर्जर है वेल्थ मैनेजर बिजनेस जो कि नोवा वेल्थ से डीमर्ज करेंगे और जो NWML है उसको अलॉट करेगी 1.05 शेयर जो कि एडलवाइज फाइनेंशियल शेयर होल्डर्स को प्रोपोर्शनल बेसिस पे मिलेगा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ने भी कहा कि जो उनकी टीआई क्लीन मोबिलिटी उन्होंने एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन किया है मल्टीपल प्राइवेट इक्विटी फंड के साथ एसबीआई के साथ और ये इन्वेस्टर्स से अगर रेस करेगी 1950 करोड़ का कैपिटल और ये टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा एसबीआई और एसबीआई के आसपास का जो कि 1200 करोड़ रहेगा, बाकी सारे मिला के 750 करोड़ के आसपास का रहेगा। और अगर ट्यूब इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो 640 करोड़ उन्होंने वे ऑफ इक्विटी और आईसीडी के जरिए उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है और एडिशनल रेस कर रहे हैं 1050 करोड़ जो कि मार्च 24 तक करेंगे। तो ये टोटल फंडेज में 3000 करोड़ तक लेके जाना चाहते हैं। फिनिक्स मिल की सब्सिडरी जो कि पलाडम कंस्ट्रक्शन उन्होंने कहा कि उन्होंने कंप्लीट की एक्विजिशन जो कि लैंड पार्सल 5.5 एकड़ का जो कि अलीपुर कोलकाता में है और ये टोटल इसका एक्विजिशन कॉस्ट देखे जाए तो 414 करोड़ के आसपास की एक्विजिशन और 1 मिलियन स्क्वायर फीट का सिंगल एरिया में सेल करेंगे। एबीबी इंडिया के लिए कुछ न्यूज़ है। उन्होंने एक नया ऑटो फैसिलिटी स्टार्ट किया नासिक में जो कि डबल करेगा उनका गैस इंसुलेटेड स्विच किया जो कि करंट प्रोडक्शन का फैसिलिटी है
और ये फैक्ट्री मैन्युफैक्चर करेगा जो प्राइमरी और सेकेंडरी GIS, और टोटल देखा जाए तो 70,000 स्क्वायर फुट का लैंड पार्सल है। और GIS बेसिकली यूज होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, स्मार्ट सिटीज के नेटवर्क में, डेटा सेंटर्स में, ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, रेलवे, टनल, पोर्ट्स, हाईवेज और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी दिया गया था। तो ये बेसिकली एडवांस रोबोटिक्स और मैन्युफैक्चरिंग और इनकी जो नॉर्म्स है जो GIBC ने सेट किया है उनको ये कैटर करते हुए देखिए। सो और बाकी हम न्यूज़ पे देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जायडस लाइफ को एक अप्रूवल मिल गया US FDA से, जो पिटावस्तन टैबलेट्स के लिए। पिटावस्तन एक HMG जो रिड्यूस करता है इनहिबिटर और इंडिकेट करेगा ये एडजेंटिव थेरेपी के लिए, जो कि एडल्ट पेशेंट्स में प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया और वेज डिसऑर्डर के लिए यूज होता है। बजाज ऑटो पे भी एक अपडेट कही गई कि वो अपनी जो प्रोडक्शन है प्रोबेबली 25% तक कर सकते हैं मोटरसाइकिल और 3 व्हीलर में। ये बेसिकली एक्सपोर्ट फोकस मार्केट के लिए रहेगा नेक्स्ट मंथ में, क्योंकि जो कि अनसर्टेनिटी जो उनकी सबसे बड़ी मार्केट है नाइजीरिया में, उसको देखते हैं। NBCC ने कहा है कि उन्हें भी एक अप्रूवल मिल गया है, 350 करोड़ ऑर्डर मिला है, सॉरी 350 करोड़ का, जो कि वर्क करेगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के लिए और वेरियस बिल्डिंग जो कि मोतीलाल नेहरू नगर पे की जाएगी। टेगा इंडस्ट्रीज ने भी कहा है कि कंपनी सेट कर एक्वायर किया मैकनेली सयाजी इंजीनियरिंग इन ऑर्डर को एक्सपांड करेंगे बिजनेस पोर्टफोलियो के लिए। और ये एक्विजिशन देखा जाए तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंप्लीट अगले 2 महीने में, और ऑप्टिकल मिक्स रहेगा, इंटरनल रिसोर्सेज और डेट की तरह ये फाइनेंस करेंगी। कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स ने भी इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट्स को टोटल 800 करोड़ का दिखाया गया है। अगला न्यूज हम देखेंगे, IOC का कंपनी सेटअप करना चाहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, जो कि अक्रॉस ऑल रिफाइनरीज रहेगी। टोटल ये पेमेंट देखा जाए 2 ट्रिलियन के ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान रहेगा, जो कि कंपनी को नेट जीरो करना है मिशन अपने ऑपरेशन से बाय 2046 तक। मैनेजमेंट ने भी ये एम किया कि रिफाइनिंग कैपेसिटी जो 106.7 मिलियन पर एनएम है करंटली फ्रॉम 81.2 तक। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस ने भी कहा कि तो उनकी जो रियलिटी फॉर्म है वो एक्सपेक्ट करिए लीजिंग बिजनेस के लिए, क्योंकि एनुअल रेवेन्यू 500 करोड़ तक आ सकता है 2025 तक। अभी जो है दिख रहा जा रहा है 298 करोड़ के आसपास तक लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। और रेजिडेंशियल सेगमेंट में भी देखा जाए तो कंपनी एक्सपेक्ट टच करना चाहती है 2,500 करोड़ तक, जो कि 2025 तक रहेगा। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1,000 करोड़ का है। ग्रैनुल्स ने कहा कि उन्हें US FDA अप्रूवल मिल गया है एब्रीवेटेड न्यू ड्रग के लिए, अंडा जो बोलता है, क्योंकि लोसाशन पोटाशियम टैबलेट है, जो कि 25, 50, 100 mg में रहेगी, और टैबलेट यूज की जाती है हाइपरटेंशन के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरग्लोब एविएशन के लिए, जो 50 से भी ज्यादा इंडिगो और गोफर्स की जो प्लेन्स ग्राउंड पे है, क्योंकि जो पैटर्न रखने के इंजन की जो प्रॉब्लम थी अभी भी चल रही है, और सप्लाई चेन के एडवांस के चलते एयरलाइंस को ये प्लेन्स को ग्राउंडेड ही रखना पड़ा, और वो वेट लीजिंग के जरिए एक रास को जो कि मिनिमाइज करना चाहता है अपना डिस्ट्रिब्यूशन हो रहा है, जो कि एक रास ग्राउंडेड है। इंडिगो ने भी कहा कि वो दूसरे ऑप्शन देख रहे हैं, और जो रीडिलीवरीज या थ्रू दूसरे लीज के एक्सटेंशन के चलते री इंडक्शन करना चाहते हैं एयरक्राफ्ट को इस फ्लीट में। नेक्स्ट हम देख रहे हैं पिरामल ने भी कहा कि वो कंसिडर करना चाहते हैं रेज करेंगे 600 करोड़ तक, जो कि इश्योर करेंगे सिक्योर रेटेड लिस्टेड रिन्यूएबल NCDs के जरिए। और ये इसके लिए वो एक 1 मार्च को मीटिंग भी होल्ड करना चाहेंगे, और स्टॉक में रिपोर्ट किया था 24 फरवरी को। इसके जरिए बाद में हम देख रहे हैं कि अप्रूव उन्होंने 100 करोड़ का NCDs और एक ऑप्शन रखेंगे ग्रीन शू के आसपास, जो कि 500 करोड़ तक का रह सकता है। NTPC के लिए ये न्यूज है कि उन्होंने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है 4,121 करोड़ का, जो कि अपने शेयर होल्डर्स को FY 2020 के देंगे। कि अगर डिविडेंड का देखा जाए तो 42.5% इक्विटी शेयर होल्डर के निकट का, अगर देखा जाए तो 30 साल में कंटिन्यूसली NTPC डिविडेंड डिक्लेयर कर दी है। सो ऐसा कंपनी का कहना है। IEX का ये कहना है कि वो एक लॉन्च कर रहा है हाई प्राइस है, जो मार्केट सेगमेंट मार्केट्स के वो कह रहे हैं कि हाई प्राइस पर भी सेल कर सकते हैं पावर, क्योंकि कम से कम मैक्सिमम 50 एट द रेट ऑफ 50 पर यूनिट में किया जाएगा। और इसका CERC का अप्रूवल मिल गया 3 कैटेगरीज के लिए, क्योंकि पावर जनरेटर्स को पार्टिसिपेट कर सकते हैं HP डैम मार्केट में, जो कि गैस बेस्ड जनरेटिंग स्टेशन रहेंगे, जो कि इम्पोर्टेड RLNG और नाफ्ता से की जाती है, और थर्मल प्लांट से यूज होगा, जो कि इम्पोर्टेड फूड रहेगा। और एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी देगा, जिसका पेटिशन IEX का। So overall, that's it from my end. Thank you everyone for attending the morning phone call. You may now disconnect.